Hi, my name is Sheetal and welcome to my channel. So if you are a seasoned traveler या बस कुछ travel inspiration लेने के लिए आए हैं, I would say this is the right place. So without delaying it further, today we will talk about Bali. आप इंडिया से बाली कैसे जा सकते हैं? कितने दिन का स्टे सही रहेगा? Average price for hostels or hotels and the itinerary for 10 days. फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज कि क्या मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा बाली जाने से पहले एंड व्हाट एल्स डू आई नीड टू ट्रैवल टू बाली सो आई मेड अ शॉर्ट्स ऑन दिस बट मैं स्क्रीन पर सब डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कर रही हूँ मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट लेकर जाएं उसे ना भूलें एंड मेक श्योर आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट अभी भी 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो 2 एम्प्टी पेजेस हो फॉर स्टैम्पिंग सो इट्स अ वीज़ा ऑन अराइवल आप जैसे ही वहाँ लैंड करेंगे you'll get your visa for 30 days and you can also extend it for the 30 days and you know that you will have to pay the fees for it visa it's not free anymore so the fees will be around 2500 or 2800 it will depend on that day's exchange rate for the US dollars right so once you pay your fees you'll get your visa and another question that comes in is like what is the best time to visit Bali मुझे कब बाली जाना चाहिए कब वहाँ मौसम अच्छा रहेगा कैसा रहेगा तो मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल से अक्टूबर बहुत अच्छा मौसम रहता है एट दैट टाइम देयर इज़ नो रेन बट थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि बाली इज़ अ वेरी टूरिस्टी प्लेस एंड इट्स अ ट्रॉपिकल प्लेस सो बहुत सारे लोग बाली विज़िट करते हैं मैं पर्सनली खुद फरवरी में गई थी तो इट वॉज चीप एट दैट टाइम थोड़ी सी बारिश हुई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई ट्रिप बट इट डिड नॉट एक्चुअली हैम्पर माई ट्रिप इन एनी वे now, third chapter here would be about the flight booking. So, on an average, a round trip can cost you somewhere between 25,000 to 30,000. थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा सो इट्स ऑलवेज द बेस्ट वे टू कीप एन आई ऑन दी flight tickets and if it is suiting your leaves or holidays right so my recommendation generally is कि आप अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट भी कराते हो तो कोशिश करो कि एक ही एयरलाइंस की हो डिफरेंट भी हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट माई पर्सनल प्रेफरेंस नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन बाली तो एयरपोर्ट से निकलते ही यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टैक्सीज तो वहाँ टैक्सीज की तो ऐसे कोई इशू नहीं है जैसे इंडिया में हमारे पास ऊबर या ओला होता है वी यूज़ दैट राइट सो सेम वे keep Grab and Gojek cars installed on your phone before you leave for Bali. And once you are at your destination, and you can also rent a scooter or bike. Generally, वो लोग क्या करते हैं as a security purpose, they keep your passport for for safety with them. So once you return the vehicle to them, they'll give back your passport. So that is not going to be a problem. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करेंसी का क्या करना है तो हमें पता है 1 इंडियन रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू अराउंड 185 इंडोनेशियन रुपया सो फॉर इंडियंस इंडोनेशिया इज़ बिट cheaper so best would be if you take certain amount in US dollars and get it exchanged at Bali airport या फिर आप लोकल मार्केट में भी जाके एक्सचेंज करा सकते हैं वहाँ ATM फैसिलिटीज़ है हर जगह सो आपको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ योर फॉरेक्स कार्ड डायरेक्टली तो वो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है तो करेंसी को लेकर आई डोंट थिंक देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम Next part is where will you get a SIM card? So, like any other place, you can get your SIM card at the airport or maybe in any local store in the city. You will easily get a SIM card. Although I must say, Bali में Wi-Fi connectivity काफ़ी अच्छी है. So you only use your SIM card for calls or any emergency. You don't end up using your SIM card a lot because there's free Wi-Fi in stores or cafes. So I think it's pretty good deal. Now let's talk about the itinerary for 10 days. So my recommendation would be if you can start your trip from North Bali and Ubud. I'm listing all these places where you can go. These are very Instagram famous places and बहुत सुंदर है. There's so much greenery and I'm sure you'll love it. So while you cover these
places in the first 2 days. Day three, you can visit to Pura Limpiong Temple. I'm sorry if I'm not pronouncing the names right. And this place again is very beautiful. You get so beautiful pictures. You get a view of Mount Batur also. But जब मैंने ये picture click करा तब पूरे बादल आ गए थे तो I didn't get a view of Mount Batur, but it's very beautiful. But make sure आप वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएं because बहुत लंबी लाइन होती है and there's a coupon system, so you'll get a token and your token number will be there. So जब आपका नंबर आएगा तब आप जाएंगे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने पिक्चर्स क्लिक कराएंगे. सो मेक श्योर यू रीच देयर ऑन टाइम सो दैट आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े. And once you're back from that place, you can same day check out from Ubud and leave for Canggu. And by the time you'll reach there, it would be evening, so you can enjoy the market, beaches, and nightlife is very lit in Canggu. So if you are actually a party person, so there are so many good beach clubs which you'll like. So please go there. And now to day four, what you can do is you can go to South Bali. आप अर्ली मॉर्निंग पतंग भाई पोर्ट जा सकते हैं एंड वहाँ से स्पीड बोट लेके आप एक 2 दिन का ट्रिप किली चवंगन के लिए भी कर सकते हैं. दिस इज़ completely optional, but if you want to experience a very chill and slow life for a day or two, I'd suggest you should go. This was my personal favorite from the entire trip. जस्ट मेक श्योर आप जाने से पहले स्पीड बोट्स की टाइमिंग्स कंफर्म कर लें कि क्या यहाँ से स्पीड बोट चलेंगी, कितने बजे चलेंगी. सो यू नो you'll reach there on time, then you'll have an entire day in Gili Tea. You can do snorkeling if you want, you can do water activities, you can just cycle around, you can just walk around the island. बहुत 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 सुंदर जगह है. And next day, when you wake up, you can enjoy a morning cycle ride and enjoy the sunrises from these beautiful swings. And then again, breakfast करके island घूम के आप आराम से evening or maybe the last ferry you can take. Day six, what you can do is you can check out the south of Bali, stay in Kuta या Seminite में रह सकते हो. And शाम के time, please go to Uluwatu temple. And वहाँ जाके कैचक डांस परफॉर्मेंस ज़रूर देखें. It's based on Ramayana. And like I said, it's very beautiful scenery, beautiful views. एंड सिंस इट्स अ टेम्पल आपको बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा, बहुत रिस्पेक्टफुली. एंड यू हैव टू मेक श्योर यू रीच देयर ऑन टाइम अराउंड 3:30 या 4 बिकॉज टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी फेमस, पीपल लव इट, आई लव्ड इट. So make sure you reach there on time, get your tickets and pass your time. So day 7 and 8 you can plan a trip to Nusa Penida. So to get a speedboat आप सानोर जाएं, वहाँ से एक speedboat लें. On an average price would be 1500 या 2000. तो आप जैसे ही नुसा पनीडा पहुँचते हैं तो फर्स्ट डे यू कैन एक्सप्लोर डायमंड बीच, आटू बीच. बहुत ब्यूटीफुल है. इट विल बी एट वन साइड ऑफ नुसा पनीडा, so you need to know the hike down and up to Diamond Beach is very difficult. So make sure you are wearing good shoes, you are in comfortable clothing. The next day, you can visit to Killington's Beach, Angels Billabong, Broken Beach. It's very beautiful. It's very nice. Just a tip that जल्दी सुबह के टाइम निकले ताकि भीड़ कम मिले because these are very famous places. These are very beautiful. Everybody is there, so be there early morning and really enjoy your time. Day 9 you can come back to Bali and spend rest of the day as you want. It could be a rest day or shopping day. You can just buy things for your family and friends, and the same day at night you can plan your trip back to India, or you can travel back to India on day 10, which is more comfortable, honestly. Now, chapter 8, let's talk about the budget of the trip. So, I think 70,000 to 80,000 में काफ़ी comfortable trip हो जाता है. On an average आपको hotels वहाँ पर 2,000 से 2,500 के बीच में मिल जाते हैं per day के लिए. But again, we know there is no top bar to spending, so it can go as high as you want, right? Um, Now, additional tips. I always recommend downloading offline maps.
Whenever I go on trips, I make sure I have offline map of that place downloaded. उससे क्या होता है कि let's say मेरे पास इंटरनेट नहीं है उस पॉइंट पे and I have to reach from place A to place B, I can always rely on that map, right? And next is what I say, whenever you are traveling outside India, हमेशा travel insurance करा लें, काफ़ी cheap होता है। आप पॉलिसी बाजार, टाटा AIG, ICICI लॉम्बार्ड और ऐसे काफ़ी अच्छे वेबसाइट है जहाँ से करा सकते हैं। And don't forget to share your insurance and travel itinerary with your friends and family. They should know about your whereabouts. And last is food. So I don't think food is a problem in Bali. You can easily get vegetarian and non-vegetarian food वहाँ पर. So अगर आप eggs या नहीं खाते हैं तो you have to order for a vegan food. Because वहाँ पर eggs को and fish oil को vegetarian माना जाता है. So be sure of it. I think that's pretty much it for my first video. If you really like it, so please appreciate it by liking the video, commenting, and subscribing to the channel. Thank you.